Hello. Hello, Shankar. Are you listening me? Shankar, I am audible. Uh, Hello, Jitesh Sharma. I am audible. Shankar, I am audible. Hello, Shivam. I am audible. Yes, sir. Good. Shankar is not replying. Shankar, you are listening me? सर हो सकता है नेट का इशू हो उसका। Yeah, that's why. That may be. That may be. Jitesh Sharma, are you audible? Am I audible to you? मैं सुनाई दे रहा हूँ. Maybe some students facing network issue. Okay, again, Dharminder, Jay Shankar, Jitesh Sharma, and Shivam. So let us start. Anyone, any students can tell me I am audible and my screen is visible? यस सर। Very good. Thank you. So yes, in the last few classes we had discussed about the NMR. We had discussed about theory, introductions of NMR, theory of NMR, instrumentation of NMR, chemical shift, factor affecting chemical shift. Now we are discussing about spin splitting. What is the spin splitting? Students, we had discussed yesterday NMR and ANMR spectra, in which we have seen that there are NMR absorption peaks, maybe in the basically in the downfield, and the peaks intensity of peak that give us the number of the same types of proton, as well as the chemical shift tell us electronic environment of about the proton that we had discussed. Now the another point, there is a split spin coupling. Students, we have seen that the absorption peaks that are not a there are not, the peak is not sharp, they are finger like projections, and these types of finger like projections, that is called as multiplate. So these multiplates, there are due to the neighboring hydrogen that is present, and that types of multiplate is known as, these types of, you can say, multiplate is known as spin splitting, and the multiplate that may be named as singlet, doublet, triplet, quadrate, accordingly depends on number of the splitting are there. So this happen because of the interactions with the neighboring hydrogen. So these types of splitting, finger like projections or multiplate, rather than a single peak, that is obtained due to the neighboring proton, and this types of multiplate
multiplication or multiplates or these types of phenomena is known as spin splitting. So the sub peaks are due to the spin splitting and are predicted by n plus 1 rule that I have discussed with you, that the n is the number of similar types of, you can say, number of the protons, neighboring protons. So each types of protons senses the number of the equivalent proton on the carbon atom next to the one to which it is bonded, and its resonance peak is split into the n plus 1 component. So look at it, students. The main hydrogen, the carbon, there is encircled, and the neighboring protons are the two. So as per the n plus 1, the splitting may be the 3. Another in the blue color, there is circle is there. In blue color proton, carbon, there are the two proton, but both protons are the single type proton, same environment. So their peak will be doublet. Why? Because of the neighboring proton are n is equal to 1. So n plus 1 plus 1 is 2. So the n is the number of the neighboring proton. And we are similar types of proton. We are not considering similar types of proton. We are considering neighboring protons. So number of the neighboring proton plus 1 means n plus 1. They are called as splitting. So singlet, doublet, triplet. Accordingly, we can get it by this formula n plus 1. So proton that are equivalent by symmetry usually do not split one another. Means important thing is if there is the neighboring proton, but both have the similar types of chemical environment. So they are not considered as a splitting because of they are similar types of proton. They will be considered as a single peak. And protons in the same group usually do not split one another. So same types of proton will not give any types of splitting, but the neighboring different types of proton will give the splitting. That we had discussed, students, in last class as well. So and as per the n plus 1, you can tell me that number of the n plus 1 applies the principally to the protons in a aliphatic saturated carbon chain or saturated ring also. Yes, we can apply. And but does not apply in the simple way that's shown here to the proton on the double bonds or benzene rings, because benzene rings atoms have the similar types of proton. Students, here is the Pascal triangles. This Pascal triangle means if you are putting n plus 1 in n is equal to 0, then it will be singlet. N is equal to 2, then there would be the, sorry, n plus 0, n is equal to 0, then it will be singlet. N is equal to 1, then it would be doublet, 1 1 1. N is equal to 2, then 2 plus 1 3, triplet, 1 2 1. N is equal to 3, then it will be the quadrate, 1 3 3 1. How we can say? You add 1 plus 1 in between 2. You can add 1 plus 2. There is the 1 and 2 3, and again 1 plus 1 3 and 1. So accordingly 1 and 1 and 3 4. 1 3 3 3, there is 6, and 3 4 1, there is 4 and 1. So this is this types of triangle that is we can obtain, that is given by the Pascals. The Pascal triangle tell us about the multiplications, multiple peaks, the intensity of the multiple peaks that we will obtain in the splitting. So स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया स्प्लिटिंग क्या है? मैं एक बार फिर से बताता हूं। स्प्लिटिंग का मतलब है कि आपके जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं, उन नंबर ऑफ द नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं, वो आपके n होंगे। n प्लस 1 आपके स्प्लिटिंग होगी। अगर n इज इक्वल टू 0 हुआ
तो आपका एक ही सिंगल पीक होगा। अगर n इक्वल टू 1 हुआ तो 2 होंगे डबलेट और 1 1 होंगे, इस तरह से ट्रायंगल बनता चला जाएगा। और अगर 3 हुए तो n इक्वल टू 3 मींस 3 प्लस 1 कितना हुआ, एन ट्रिपलेट, सॉरी ट्रिपलेट अगर जब होगा, जब n इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, 2 प्लस 1 इज 3, तो 3 होंगे, वो कैसे होंगे 1 और 1 1 का 2 कर देंगे 2 एंड 1, इस तरीके से एक बीच में जो है बड़ा होगा, दो तरफ से छोटे होंगे, जस्ट लाइक यू कैन से ऐसे, इस तरीके से एक बड़ा पीक होगा, दो छोटे पीक होंगे साइड में, ऐसे क्वाड्रेट में 1 3 3 1। तो इस तरीके से ये एंगल जो बनता आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पास्कल एंगल, पास्कल ट्राइंगल। एंड ये हमें मल्टीप्लेट जो है उसकी पीक्स के बारे में बताएगा, किस तरीके से मल्टीप्लेट की जो है स्प्लिटिंग पीक्स आएगी। लुक एट हियर, you can see uh, there is a peak by the neighboring protons. Both are the same proton, neighboring protons are 1 plus 1. Okay, so there will not be any splitting because the similar types of protons, similar types of chemical environment, no any peak, no splitting. Okay, but look at here in the blue color, for the blue color proton, neighboring protons are 3, so n would be the 3, so 3 plus 1 is 4, so the quadrate we will obtain, the quadrate we will obtain here. In the yellow color, you can say yellow color carbon, neighboring protons for yellow color protons are 2, so n is equal to 2, 2 plus 1 is 3, so the you can say peaks that will be obtained here in blue color, there is triplet in arrow, you are putting in arrow in right side, there is the triplet, and the left side, that is it are again blue color, and green arrow, that is quadrate due to this blue colored. So I think methyl spin and methylene spleen both are called methylene spleen and methyl spleen. Or methylene spleen spins give us triplet, and methyl spleen give us quadrate. So that is about the splitting, spin splitting. Okay, students, another point is J value, that is coupling constant. So students, before discussing J value, let me know you got understood about the spin coupling or not. स्पिन कंप्लीट के बारे में समझ पाए या नहीं, स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में समझ पाए या नहीं, लेट मी नो। यस वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। देखिए हमने पीक्स देखे थे, एनएमआर पीक्स, एब्जॉर्प्शन पीक्स देखे थे। हमने कहा था कि सिंगल पीक नहीं आता है, वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं जिनको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। वो स्प्लिटिंग के कारण ऐसा होता है कि उसके जो टॉप होता है वो शार्प ना हो करके स्प्लिट होता है। ठीक है, वो जो स्प्लिट होता है वो स्प्लिट किस कारण होता है, ड्यू टू द नेबरिंग प्रोटॉन्स। कि नेबरिंग प्रोटॉन कितने होंगे उस हिसाब से होंगे। तो इसके लिए n+1 एक फॉर्मूला है, n द नंबर ऑफ द प्रोटॉन है, नेबरिंग प्रोटॉन। तो जैसे हमने एग्जांपल्स देखे तो n इक्वल टू 1 होगा तो n इक्वल टू 0 होगा नेबरिंग प्रोटॉन। अगर नहीं है, सिंगल प्रोटॉन है, जैसे OH है हाइड्रोक्स के ग्रुप में, H जो है वो सिंगल प्रोटॉन है, तो उसके लिए एक ही पीक होगा, शार्प पीक, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, नो स्प्लिटिंग, सिंगल पीक, सिंगलेट। और n इक्वल टू 2 हुआ, मतलब नेबरिंग प्रोटॉन एक, n इक्वल टू 1 हुआ, नेबरिंग एक कोई प्रोटॉन है उसके साथ में, तो क्या शो कर देगा कि n+1 मींस 2 डबलेट उसमें आएगा, दो पीक्स उसकी आएगी, ऊपर से ऊपर का जो पार्ट है उसमें दो इसकी ब्रांचेज हो जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग, स्पिन स्प्लिटिंग। ओके, और ये हमें नेबरिंग प्रोटॉन्स के बारे में बताता है कि हाउ मेनी नेबरिंग प्रोटॉन्स आर देयर विद दिस प्रोटॉन। Another topic, another point is coupling constant. So the students, coupling constant nothing is the distance that is measured in J, which is determined by J value, measured in hertz, and there is distance between the peaks in a simple multiplet. Okay, जैसे कि हमने डबलेट, ट्रिपलेट और क्वाड्रेट देखा, तो ये देखिए क्वाड्रेट है, लेफ्ट मींस लेफ्ट साइड में क्वाड्रेट है, और दो जो इनकी इसमें जो चार पीक्स हैं, स्प्लिटिंग है, और चारों पीक्स की जो डिस्टेंस है वो एक पीक से दूसरे पीक की जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज J वैल्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन ए सिंपल मल्टीप्लेट, दैट इज कॉल्ड एज J वैल्यू. So if the J value will be larger, it means I can say it
interaction between the protons is larger, is more. Means neighboring, the impact of the neighboring proton is more on the proton, on the, you can say, single types of proton. एक टाइप का जो प्रोटॉन है उसमें नेबरिंग प्रोटॉन्स का ज्यादा इंपैक्ट है. सो बेसिकली व्हाट आई कैन से, J value is a measure of the amount of interaction between the two sets of hydrogen creating the multiplates. Okay, so students, is very important. Sometimes the question may ask, what is the can say coupling constant or J value? What is the coupling constant and J value? Coupling constant and J value is the distance between the peaks in a single multiplate, and it measures the amount of interactions between the two sets of hydrogen created in the multiplate. Students, let me know you got the point about the coupling constant or not. सर इंटरैक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब? हाँ, इंटरेक्शन ज्यादा होगा. इट मीन्स just like how strongly a nucleus is affected by the spin state of the neighbors. Means coupling constant is a measure of how strongly a nucleus is affected by the spin states of a neighboring proton. It means nucleus of the one proton, that is spinning of the nucleus of the one proton, that can be affected by the neighboring proton, spinning of the neighboring proton. So what happened? There is the opposition will take place. Means spinning of the one nucleus of the one proton will opposite to the spinning of the another proton. So due to the position of the spinning, what happened? This magnetic field, at magnitude of the magnetic field will be lower. Okay, so what happened? Absorption peak will be low, at as well as the width will be high, will be large. Sorry, width will be large, but height will be low because of neighboring, spinning of the neighboring, because it's reduce the magnetic field that is induced in the you can say one proton that is going for splitting. And देखिए, मैं आपको सिंपल इस तरह से समझाऊं कि जे वैल्यू जो आपका कपलिंग कांस्टेंट है, मतलब ज्यादा है, मतलब क्या है, उसकी जो डिस्टेंस है अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एक प्रोटॉन जो सिंगल टाइप का प्रोटॉन था, उससे नेबरिंग जो प्रोटॉन थे, वो नेबरिंग प्रोटॉन उसको उसकी स्पिनिंग में इंटरेक्शन कर रहे हैं. जो सिंगल प्रोटॉन है वो जो स्पिनिंग करता है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है, वो जो नेबरिंग प्रोटॉन है उसकी स्पिनिंग के कारण उसके नेबरिंग, उसकी इलेक्ट्रॉनिक, उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर क्या होगा, अफेक्ट होगा, वो इसको अफेक्ट ज्यादा करेंगे एंड उसको वो रिड्यूस करेंगे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग कांस्टेंट्स. ओके, कि वो कैसे स्ट्रांगली उसको अफेक्ट करते हैं, एक नेबरिंग प्रोटॉन का दूसरा नेबरिंग प्रोटॉन कितना इंपैक्ट डालता है, कितना इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट वो रखता है और कितना वो अफेक्ट करता है, ये हमें कपलिंग कांस्टेंट बताएगा. एंड कपलिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज. स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया नहीं कपलिंग कांस्टेंट? लेट मी नो प्लीज. सर अगर इंटरैक्शन या इफेक्ट अगर ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डेफिनेटली, दो पीस के बीच में. यस जे वैल्यू विल बी द हाई, J value will be more. Okay. Yeah, distance will be more, J value will be more. Okay, sir. Okay. Anyone? So good, you got the point. Importance of coupling constant. Yes. Yeah, very good. So this is the coupling constants. We are taking examples like in look at here in hertz, 7.7 hertz, and this is 100 hertz. We are applied 100 for the proton NMR and 400 hertz in the carbon NMR. So J value, that is a shifting depends on the field basically. So J value that also depends on the magnetic field, applied magnetic field. If you are applying the more magnetic field, then definitely J value will be more. J value will be increased. Okay, so it depends on the magnetic field that is applied. So coupling constants are coupling constant. They will do not change at the different magnetic field strength. What do you mean? What do you mean? My meaning is that if we are applying magnetic field 100 hertz,
if you are applying magnetic field 200 hertz, if you are applying magnetic field 400 hertz. So depending on the magnetic field we are externally applied, it does not affect J value or coupling constant. Coupling constant will be the fix, because the coupling constant is depends on the type of protons or neighboring protons. Basically you can say types of neighboring protons or electronic environment of neighboring proton. It will not depends on the applied magnetic field. Students getting my point? So look at here, in upper one there is, if your magnetic field is 100, then J value is the constant, it's not changing. If you are increasing the external magnetic field 400 hertz 200 megahertz hertz, but magnetic coupling constant will not be changed. Students getting my point? Yes, sir. Very good, very good. Okay, another this is J value they are putting like 3G or vicinal G, these are 2G. So they are the nothing else, it's they are representations of J value. Means J value is for geminal or vicinal plus 2 or 3 by the numbering of the carbon we can give accordingly. Oftenly J2 will be maybe accordingly we can put, we can write accordingly that J value for which carbon, which proton, numbering according. Like for example alkane means ethane is there, so 1 2, so 2 number of the carbon is 2, so proton will be the 2, so J value will be the 2. Okay, accordingly we are putting here. Okay, so that is I am explaining explain you. Alkane basically the coupling constant, this chemical shift that is vary from, is there a value. If the methyl alkane, the methyl group is there, then 0.7 to 1.3 ppm. There is increasing, R value will increase, then chemical shift will increase. Similarly, coupling constant that will be come under the 7 to 8 hertz J value. Don't remember it, just for information only. Cannot, nobody can remember it. Just keep in mind that chemical shift for alkane will be, we can say shielded, will be shielded means near to TMS. But alkene, because the availability of electrons more in alkene due to the pi bonds, so chemical shift will be shifted towards downward field, deshielded downward field. You know, 4 to the 6, 4 to 6 ppm. Okay, so coupling and G constant, coupling constant also get increased 11 to 18 or 15. Okay, if there is a availability of electron is more, so depend on available electrons, coupling constant will also increase. If the what, why? Because of neighboring proton contain the electronic environment, high electronic environment, it means J value will be more. So example, this is 2 methyl 1 pentene is an NMR spectra of that. And सर एक बार लास्ट वाला एग्जांपल दोबारा से एक बार देखना. this one, यस okay, सर इसमें जो दो स्ट्रक्चर्स है एल्कीन के, पहला और दूसरा, उसमें जे वैल्यूज में इतना डिफरेंस क्यों है? हाँ, बिकॉज ऑफ देर इज दिस, ये प्रोटॉन जो आपका है दैट इज फर्स्ट वन, फर्स्ट अपर वाला जो आप देखिए एग्जांपल एल्कीन के दो एग्जांपल हैं. पहला वाला जो अपर वाला का एल्कीन है, उसमें जो प्रोटॉन जो जुड़ा हुआ है कार्बन से, वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड मींस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है. मींस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर ऑन दिस कार्बन. So this proton having the more electron environment, more easily available electrons. So what happen? The chemical shift will be the high. And similarly, J value also will increase because of the availability of the electron is high. बट जो दूसरा वाला एल्कीन है जिसमें क्या हुआ, एक कार्बन बीच में है, मींस डबल बॉन्डेड नहीं है. डबल बॉन्डेड कार्बन क्या है, दूर है उससे, अवे फ्रॉम द प्रोटॉन. सो क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेसर, सो केमिकल शिफ्ट विल बी लेसर एज वेल एज कपलिंग कांस्टेंट विल बी लेसर. सर राइट साइड जो स्ट्रक्चर है, राइट साइड में, नीचे वाला, हाँ राइट राइट साइड सेकंड साइड. ओके, देखिए राइट साइड में क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. अब देखिए नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है इसका, ये जो प्रोटॉन है वो इस
कार्बन के कारण वो नेबरिंग है, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये इसके जस्ट नेबर, डायरेक्ट नेबर में नहीं है, जस्ट सबसे राइट साइड में सबसे बिलो वाला एग्जांपल है, उसकी बात कर रहा हूं मैं कि उसकी, क्योंकि उससे ऊपर वाला जो है उसमें एक दो सिमिलर टाइप के प्रोटॉन है, ठीक है। नीचे वाला जो है प्रोटॉन कौन सा है, उसके बीच में कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, जो डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो वो क्या हुआ, उसका इंपैक्ट उस पर नहीं आ पा रहा है, इसलिए जे वैल्यू जो है वो बढ़ नहीं रही है। आप देखिए 0 to 1 और 0 to 3 उसी रेंज में आ रही है, समझ पाए? सर ये बीच वाला स्ट्रक्चर हाँ हाँ, वाला सेकंड वाला बीच वाला जीरो स्ट्रक्चर, टू वन हाँ देखिए सेकंड वाला जो बीच वाला स्ट्रक्चर है वो ये कि अगर इस टाइप का पोजीशन है ये, लेकिन दोनों प्रोटॉन है वो सिंगल एनवायरमेंट के प्रोटॉन है। अब इस स्ट्रक्चर में जे वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर नेबरिंग प्रोटॉन हुआ दूसरे कार्बन पे तो फिर वो जो है कपलिंग कांस्टेंट बढ़ेगा फर्दर, क्योंकि इनके ऊपर कोई नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन है लेकिन नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है। जो बीच वाला जो है राइट हैंड पे उस पे नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है, इसलिए उसको 0 to 1 मतलब एक तरह से 0 to 1 हर्ट्ज जिसको शो किया है, मींस कपलिंग कांस्टेंट विल बी द 0 बिकॉज देयर इज नो एनी डबल बॉन्ड, नो एनी नेबरिंग प्रोटॉन। ओके जी, समझ में आ गया? ओके हाँ जी, आगे चलें? यस सर। Okay, thank you. So this is an example, 2-methyl 1-pentene. 2-methyl 1-pentene. Let me know how many types of proton. बताइए, आप बताइए इस स्ट्रक्चर में कितने टाइप के प्रोटॉन हैं? सिमिलर टाइप के प्रोटॉन। वैसे मैंने यहाँ नंबरिंग डाल रखी है ABCD सर 5 है। E, हाँ 5 हैं। सब लोग एग्री हैं मेरे नंबरिंग से? यस सर। किसी को है डाउट कि ये 5 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन कैसे हुए? ये तो किसी को डाउट नहीं है क्योंकि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ये पार्ट। स्टूडेंट रिप्लाई मी। यस सर। किसी को नहीं है? ओके गुड। नेक्स्ट पार्ट, देयर पीक्स मींस केमिकल शिफ्ट। स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जैसे एक ए जो हमने लेबल्ड किया है वो प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन है मिथाइल ग्रुप के, 3 सिमिलर टाइप के प्रोटॉन है, ठीक है। और ये इनकी जो केमिकल शिफ्ट क्या होगी, एल्केन की जो है मिथाइल ग्रुप है तो ये क्या होगा, शिल्डेड होगा, मींस इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम है इस ए प्रोटॉन पे, और ये टीएमएस के पास इसकी जो है एब्जॉर्प्शन पीक आएगी जो नियर बाई 1। दूसरा बी प्रोटॉन है वो उससे अवे होगा। देन सी प्रोटॉन वो भी एक तरह से मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ा है, इसलिए उसका उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए और बी, इसलिए ये क्या होगा, केमिकल शिफ्ट थोड़ा सा बढ़ गया, 2 की तरफ आ गया। तीसरा जो डी जो है वो ट्रिपल जो है आपका थोड़ा सा और आगे आ गया क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा है। सिमिलरली ई वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनवायरमेंट, अच्छा इलेक्ट्रॉन एनवायरमेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड उसी कार्बन पे जुड़ा है, तो ये सबसे ज्यादा डिसिल्डेड है, सबसे अवे है। आई थिंक केमिकल शिफ्ट यू गोट, समझ में आ गया केमिकल शिफ्ट तो? यस सर। वेरी गुड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्लिटिंग। स्टूडेंट्स बताइए मुझे, कार्बन जो ए नंबर का जो प्रोटॉन है उसकी स्प्लिटिंग कितनी होनी चाहिए, आप कैलकुलेट करिए, बताइए। ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, वाई? यस यस, हाउ? सर नेबरिंग प्रोटॉन उसके पास 2 हैं तो 2 हैं, वेरी गुड, 2 + 1, एक्सलेंट एक्सलेंट, वेरी गुड। ओके, आई थिंक समझ में आ गया आपको। बी के बी लेट मी नो अबाउट बी। सर 6. 6, yes, neighboring protons are 5, so 5 + 1 6, yeah. About C, कौन बता सकता है? Singlet, very good, because there is no neighboring proton, कोई भी नेबरिंग नहीं है भाई, वो मिथाइल ग्रुप का सेपरेट है, कार्बन के ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है जिससे वो जुड़ा है, इसे सिंगलेट। डी, डी के पास कितने नेबरिंग प्रोटॉन है? 2 + 1 2 प्रोटॉन है, 2 + 1 3, ट्रिपलेट। एंड ई,
Singlet. Very good. So now you understood about the you can say interpretation of NMR excellently. These are the aromatic compounds. You don't remember it. These are the chemical shift. Basically, the aromatic compound shows the chemical shifting away from, you can say TMS is downward shifting, and away from TMS, you can say J value will be higher, and depends on that. Ortho proton will shows 7 to 8 hertz, meta 2 to 3, and para 0 to 1 hertz. So these are the just a I can say a range, not exact. Okay, so these are the chemical shift and coupling constant that aromatic compound में shows. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है जो बेंजीन के पास जो प्रोटोन है, बेंजीन के पास जुड़ा हुआ कार्बन है, उसका जो प्रोटोन है, इट शोज chemical shift, less chemical shift, you can say shielded or less deshielded, 2.3 to 2.7 ppm, जो कि नेबरिंग है किसके, टीएमएस के पास में. तो क्यों? क्योंकि इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कम है एज कंपेयर टू प्रोटोन जो कि डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ज्यादा है. सो ये शील्डेड होगा, सॉरी डीशील्डेड होगा. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. Okay, so alkyl group that is adjacent to this one, I have explained you this point. So students, this is another example, toluene. ये आपके इंट्रोडक्शन के लिए पॉइंट है. Let me know how many types of protons in toluene. Similar types proton कितने हैं? 2. वेरी गुड. एक मिथाइल ग्रुप में और 2 आपके बेंजीन में. ओके, और जो मिथाइल ग्रुप का जो प्रोटोन है, मिथाइल ग्रुप का प्रोटोन है, वो क्या होगा, शील्डेड होगा. जहां पे 3 नंबर लिखा है हमने, 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब टीएमएस की तरफ है, शील्डेड है, 2 पॉइंट समथिंग जो है इसका केमिकल शिफ्ट है. और ये क्या है, सिंगलेट है कि ये ट्रिपलेट है, डबलेट है, व्हाट क्या है? सिंगलेट. व्हाई? Neighboring proton 0 नहीं है. वेरी गुड. Yes, because sir. neighboring proton is not there. Carbon does not there is part of the benzene, so the carbon does not having the proton. That's why the singlet. And rest 5 protons means protons of the benzene, 5 protons. These are the 3 protons, we are putting 3, and there are 5 protons, so the peak is more because 5 are the similar types of proton. 5 protons, they're the peak, more peak, and 5 protons. Can you tell me splitting is there or not in the proton of benzene? There is any splitting or not? स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी बेंजीन के प्रोटॉन में, बताइए. स्टूडेंट्स आर यू ऑडिबल? सर होगी शायद. कैसे, बताइए मुझे कैसे होगी. सर कुछ एक हाइड्रोजन जो CH3 ग्रुप के पास है वो अलग केमिकल एनवायरनमेंट में है, और जो एक पोजीशन दूर होगा, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा पे चेंजेस होंगे सर, इसलिए सर. देखिए अगर इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि इस ऑर्थो मेटा पैरा तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो गया टोलुइन में, ठीक है, तो फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएंगे. आपने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 2 ही बताए हैं. हाँ सर, ये भी है. सैचुरेटेड में नहीं होती है सर. हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस मिथाइल ग्रुप का जो है इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है कि वो, क्योंकि जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन उसमें कोई प्रोटॉन नहीं है. मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, बेंजीन की जिस कार्बन से जुड़ा है टोलुइन में, उस कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है. इसलिए अगर उस पर कोई प्रोटॉन होता तो उस पर इंडक्टिव इफेक्ट लगता, लेकिन उसके पास वाले जो प्रोटॉन है उन पे किसी पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है उसका, क्योंकि मिथाइल ग्रुप में इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि वो इंडक्टिव इफेक्ट डाल सके. इसलिए बाकी टोलुइन के जो बाकी प्रोटॉन्स है, 5 प्रोटॉन, वो सिंबल टाइप के प्रोटॉन है, सिंगल टाइप के प्रोटॉन. इसलिए 5 प्रोटॉन्स का एक ही पीक आ रहा है, और वो भी सिंगलेट आ रहा है क्योंकि उसका कोई नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है. सो मिथाइल ग्रुप के 3 प्रोटॉन और बेंजीन के 5 प्रोटॉन, दोनों के 2 सिंगलेट आ रहे हैं,
समझ गए? Yes, sir. Okay. Okay, good. Now this is the substitutions. If the X would be the different, like electron donating group, then definitely due to the resonance you got in the organic chemistry also, that if you are putting any electron donating group in benzene, then what will happen? Availability of the pi electrons on ortho para will increase. Okay, so if the electron with donating group like hydroxyl group, like amino group is there, the strong donating group, so they definitely they will change the electronic environment of the benzene, and there is the different types of proton in the benzene. हमने टोल्यूइन तो पांचों एक ही टाइप का प्रोटॉन देखे, but here in the benzene there would be the different types of proton because of the electronic environment get changed due to the presence of highly electronegative atoms. So now look at here, students. This is not toluene. This is anisole. This is methoxy group is there. So how many types of proton in methoxy in this toluene? This is in anisole, sorry. 2. Yes, 2 types in benzene. Why? Because of the availability of electrons is more in ortho and para. So the ortho para is the similar types of proton, and meta is the different types of proton. So the ortho para, there is the 3 protons on ortho and para. दो तो हैं आपके ऑर्थो ऑर्थो पे, एक प्रोटॉन ऑर्थो, एक प्रोटॉन ऑर्थो, एक प्रोटॉन पैरा पे, तो 3 प्रोटॉन तो ये सिंगल टाइप के हो गए. देयर इज 3 प्रोटॉन्स, 3 लिखा हुआ, देखिए 3 लिखा हुआ, वो 3 टाइप सिंगल टाइप के प्रोटॉन है 3, जो कि ऑर्थो मेटा, ऑर्थो और पैरा के लिए है. और मेटा पे 2 मेटा पोजीशन में, दोनों में एक एक प्रोटॉन है, तो वो है 2 प्रोटॉन. सो 2 पीक, और ऐसे ही वो डिसिल्डेड हो रही है. ऑर्थो पैरा जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है तो वो इस तरीके से है, और मेटा पोजीशन जो है वो क्या कह सकते हैं, डिसिल्डेड है, और ये सिल्डेड है. और ये मिथाइल ग्रुप के 3 टाइप के प्रोटॉन है. दीज आर द 3 सिंगल टाइप्स ऑफ प्रोटॉन दैट इज टुवर्ड्स द कैन से शिल्डेड, और TMS दैट shows with single peak, no splitting. Getting point, students? Yes, sir. Very good, very good. Okay, so there are the number of examples again we had discussed, and I think aniline ये मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट क्लास में. इसको एक्सप्लेन करना है या समझ में आ गया? ये तो आ गया ना, एक बार फिर से बता देता हूं. लेट मी नो इन एनिलीन, एनिलीन एमिनो ग्रुप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, स्टूडेंट्स? आई थिंक यू गॉट द थिंग्स. 3 सर बेंजीन में 2 तरीके का होगा और एक NH2 का. यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड. बेंजीन में 2 हैं, ऑर्थो और पैरा का एक ही केमिकल एनवायरनमेंट है, मेटा का अलग केमिकल एनवायरनमेंट है. तो ऑर्थो पैरा के 3 प्रोटॉन हो गए, ठीक है. वो 3 प्रोटॉन का जो है पीक है, और एक मेटा के 2 प्रोटॉन है, वो सिंगल टाइप के, उनका एक पीक है. एक एमिनो ग्रुप का जो एक 1 पीक है, जो सिंगल टाइप के जो प्रोटॉन है, लेकिन उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी. एमिनो ग्रुप पे जो है कोई स्प्लिटिंग नहीं है, सिंगल पीक, सिंगल स्प्लिटिंग. बट यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि मेटा के ऊपर नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं? हाउ मेनी नेबरिंग प्रोटॉन्स फॉर मेटा? मेटा के लिए नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 होंगे. मेटा पोजीशन के लिए नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं? सर वो है, बट दोनों सेम केमिकल एनवायरनमेंट में ही है, तो उसे हम 1 कंसीडर करेंगे. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल 1 कंसीडर करेंगे. तो सर 1 + 1 2 होगा, फिर डबलेट स्प्लिटिंग होगी इसकी. नहीं, कैसे? जब मेटा पोजीशन है उसके दोनों तरफ क्या है? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस. यस सर. 2 प्रोटॉन है, नेबरिंग प्रोटॉन कितने हुए? ट्रिपलेट. 2, इसलिए ट्रिपलेट होगा. यस, क्या होगा? ट्रिपलेट. ऐसे ही अब आप चलिए ऑर्थो या पैरा पे चलिए, और पैरा के ऊपर क्या है? सर पैरा के साइड में 2 प्रोटॉन. 2 प्रोटॉन है. यस, और मेटा ऑर्थो के ऊपर? सर ऑर्थो के साइड में तो एक ही है. ऑर्थो साइड में एक है, तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हुए ऑर्थो और पैरा? एक तो ऑर्थो पे और 2 पैरा पे. सर टोटल कितने हुए? 3. सर 3 3 + 1 4.
क्वार्टरेट। Okay. आगे समझ में? Yes, sir. सभी को आया कि कुछ डाउट है? किसी को डाउट है पूछ सकता है, आगे चलें। क्वाड्रेट कैसे हुआ? हाँ, क्वार्टरेट कैसे हुआ? Yes, देखिए, ऑर्थो और पैरा दोनों के टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन काउंट करिए। टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन कितने हुए? ऑर्थो के पास नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं? 2। और पैरा सॉरी, ऑर्थो के नेबरिंग प्रोटॉन कितना है? 1। और पैरा के नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं? 2। उसका 2। तो 2 + 1 3। तो ऑर्थो पैरा दोनों का सिमिलर एनवायरमेंट है, लेकिन नेबरिंग प्रोटॉन कितने हुए? 3। 3 + 1 क्वाड्रेट। ठीक है सर। ओके ओके। ओके। नाइट्रोबेंजीन वी हैड डिस्कस ऑल्सो, मैंने बता चुका हूं ये भी लास्ट क्लास में। एक्सप्लेन करने की नीड है, जरूरत है? यू वांट फर्दर एक्सप्लेनेशन? नहीं। ओके। आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने टाइप से प्रोटॉन है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर? 2. 2 definitely. Means ortho para is the single and single one, and there is meta is the meta has different proton. यहाँ थोड़ा सा एरर लिखा हुआ है, पैरा एंड और मेटा लिखा हुआ है। दिस इज द ऑर्थो एंड पैरा एंड दैट इज द मेटा। ओके, इस स्लाइड में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। Yes, sir. हाँ, so ortho and para they have the similar types of environment and meta has the different types of environment. So this is for alkyne. I'm not going again, don't remember it. This is the again slides example. I'm not, I think you got the point. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल, आई थिंक आपको समझ में आ गया, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। व्हाट अबाउट सी? कार्बन सी जो यहाँ पर है, सी हाइड्रोजन प्रोटॉन है, उसका पीक, उसमें स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी? रिप्लाई स्टूडेंट्स। सर कौन सा? 3 नंबर कार्बन पे। स्टूडेंट्स मुझे शायद राइट कर रहे हैं कि मेरा नेट स्टेबल नहीं है। स्टूडेंट्स आई थिंक बाकी आप लोग सुनाई दे रहे हैं, आपको, मेरे को लग रहा है स्टेबल है या नहीं? यस सर। आ रहा है ना? वेरी गुड। आई थिंक उनका ही नेटवर्क इशू है। तो मैं एट सी पोजीशन नंबर 3 सी जो नंबरिंग देर की है, दिस इज द एल्काइन मॉलिक्यूल। सो इन एल्काइन द सी प्रोटोन, it is singlet or any multiple, any multiplet? नो सर, सी वाला सिंगलेट ही होगा। सिंगलेट होगा क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, आपको समझ में आ गया। तो दिस इज नाउ द एल्किल हैलाइड। सो द एल्किल हैलाइड डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एनवायरमेंट विल इंक्रीज एंड इट विल बी डीसिल्डेड। देखिए जैसे आयोडीन से लेकर के फ्लोरीन तक जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड व्हाट हैपन, द इलेक्ट्रॉन की एनवायरमेंट इस कार्बन प्रोटॉन, इस नेबरिंग प्रोटॉन जो प्रोटॉन है जिसके ऊपर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उस प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन एनवायरमेंट बढ़ेगा और क्या होगा, केमिकल शिफ्ट जो है वो डीसिल्डेड होगी अवे फ्रॉम टीएमएस। आई एम नॉट clean explaining this 1-chlorobutane. You can see the C is the nearer to TMS, okay, B accordingly they are the desilted. Alcohol again the same thing, oxygen having the lone pair of electron, the availability electron is more, so the definitely it will be the no coupling, and hydroxyl group proton, hydroxyl group because of the oxygen is there in between, so no any neighboring proton, so no coupling. सिंगलेट इसका आएगा, दोनों में सिंगलेट आएंगे। स्टूडेंट समझ में आया आपको? दीज आर नॉट नेबरिंग प्रोटॉन। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? CHOCH। यस, आपको मैंने अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया स्टूडेंट्स, आपने अटेंडेंस पुट कर दिया होगा? नो सर, अभी नहीं किया? ओहो, कहाँ पे शेयर किया था? ओके जस्ट ए मिनट, आई एम पुटिंग।
सर आज की क्लास हमारी कब तक है? आज तो 4 o'clock 3 3 to 4 ओके। 1 आवर की रोज की क्लास। यस सर सर। बहुत लंबी सर हो सुबह गई। क्लास करके सैचुरेट हो जाता है ब्रेन। अच्छा सर सुबह से हमारी क्लास होती है तो रोज वन हाँ, ये करेंगे तो सर, हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। ये चीज तो है, ये मैं समझ रहा हूँ। हाँ सर हो यस जाएगा, सर। थोड़ा सा फास्ट स्पीड कर दीजिएगा हाँ, क्या कर तो दूं? हो जाएगा। यस सर, और अभी आपको मेरा सर जहाँ दिक्कत होगी हम पूछ लिया करेंगे। अच्छा अच्छा, सर अभी नहीं आया। अभी देखिए, बताइए। यू गॉट इट? आ गया सर, आ गया। ओके ओके ओके। सर अब लीव कर दें? थोड़ा सा और पढ़ लें? नहीं सर तो हो गया। हो गया टाइम? चलो यार, मैं आपकी स्क्रीनशॉट ले लें एक। आप लोग अपने मीन्स वीडियो कॉलिंग पे अपने आप को पुट कर सकते हैं। वीडियो मोड में आ जाइए। ओके so there are 11 students, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, only 2 अच्छा okay 10 students. Okay students, so thank you very much, and we will next class we will complete your NMR spectroscopy, and I hope we will start another, there is X-ray crystallography and thermal analysis in next class. Okay, we will start after the finishing this NMR, because your syllabus is very uh, is left. Okay, so thank you very much, we will meet in next class, you can leave now. सर टाइम टेबल सर थैंक किस यू दिन सर। सर हाँ किस बोल, दिन 3 बजे से और किस नहीं दिन नहीं, 2 एक दिन बजे सिर्फ से मंडे, क्लास है? हाँ मैं आपको एक क्लियर कर दूं, सिर्फ मंडे को ही 3 बजे से है, बाकी दिन सब जगह 2 बजे से ही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ ओके सर, थैंक यू सो मच। मंडे को 3 बजे से है, बाकी 2 बजे से। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर।